एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुचिता हियर वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी कतर एयरवेज ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोना रिवील टुडे सो मैनी थिंग्स. Maybe few people will find it beneficial, or few people will not, but I will tell you, if you want to join Qatar Airways, so listen what I'm saying. So वीडियो को एंड तक देखिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखिए, अगर मैं नेगेटिविटी से ये वीडियो शुरू करूंगी तो यू विल ऑल्सो नॉट लाइक इट डेफिनेटली, एंड आई विल टेल यू सो मेनी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव थिंग्स एज वेल. आई थिंक टिल नाउ आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज अबाउट Qatar Airways and I have mentioned about it कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या सैलरी मिलती है, हाउ इट इज़ एंड हाउ यू क्लियर योर इंटरव्यू. बट मेरा आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और आप लोगों के लिए है. दिस इज़ टाइटल आपने पढ़ा है डिसएडवांटेज. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसएडवांटेज आई एम टॉकिंग अबाउट? सी, देयर आर सो मैनी पीपल, सो मैनी नेशनैलिटी, बहुत सारे लोग हैं. It's totally depends, how you take this job and how the other person takes. Maybe this is very important for you कि आपको ये job चाहिए ही चाहिए because financially, yes, I am right and you're also right. जो आपने सही सुना है. कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब चाहिए ही चाहिए because salary is too good. Like now, let me just make it very clear. In short, I will not make this video too long about the advantage, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आप छोटी एज में जॉब कर लेते हैं, आपको वहाँ अपना फ्लैट दिया जाता है वेल फर्निश्ड, आपको सैलरी दी जाती है, टिकट्स बेनिफिट्स होते हैं, और आप कहीं भी किसी भी देश के कोने में जहाँ जहाँ कटर एयरवेज जाता है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ नहीं जाता है वहाँ भी ओपन टिकट्स आपको मिलते हैं. सो यू कैन यूज़ योर डेज ऑफ. आप बहुत पैसा जमा कर सकते हैं बिकॉज ये टैक्स फ्री सैलरी होती है. अब मैं इसके आगे आपको नहीं बताऊंगी. वंस यू लैंड दोहा, मैं यहाँ से शुरू करूँगी. वंस यू लैंड इन दोहा, यू विल हैव फ्यू कैंडिडेट्स जो आपके साथ सेम ट्रेनिंग में ज्वाइन कर रहे होंगे आपको. यस, एंड मे बी आप पहले से किसी को जानते होंगे कि मेरे सेम सिटी से, या फिर मेरे पहचान का फ्रेंड, या आपके इंस्टीट्यूट का कोई भी, देयर कुड बी एनी वन ऑफ योर फ्रेंड, मे बी ज्वाइनिंग यू फॉर द सेम जॉब एंड सेम बैच. बट वहाँ जाके सरप्राइज मत होना. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल वेलकम यू. जब आपको वेलकम करेंगे तो दे विल गिव यू अ की, राइट. वो आपको आपके फ्लैट की देंगे और आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आपका ये फ्लैट है और आपका ये फ्लैट नंबर है. नाउ डोंट गेट सरप्राइज्ड इफ you and your known person will not get the same flat. Why? Because it happens. ये पहला सरप्राइज है आपके लिए. और वो आपको आपकी आईडीज भी दे देंगे आपके नाम की, क्योंकि आप जब बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो आपको आईडी स्वाइप करनी होगी, जब आप एग्जिट करते हैं तो आपको आईडी स्वाइप करनी होगी. ये सब प्रोसीजर बाद का है. चलिए, आई विल टेक यू टू योर फ्लैट. अब अगर आप किसी सीनियर के साथ अपना फ्लैट शेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. देखिए, पहले तो वहाँ पे क्या होता है, एक टीवी होता है, राइट. टीवी सब जानते हैं विच टीवी आई एम टॉकिंग अबाउट. वो टीवी का कोई यूज़ नहीं है. अगर आप इंडियन हैं और आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, यू नीड टू आस्क द परमिशन फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन टू प्ले दैट वीडियो. वाई? बिकॉज मे बी उसने अपना चैनल खरीदा होगा, मे बी इंग्लिश चैनल्स होंगे, मे बी अरबिक चैनल्स होंगे, यू नेवर नो. तो वो आके पहले आपको सबसे पहले वो बताएगी या बताएगा, इट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, कि ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है और ये कॉमन एरिया है. अभी अगर आप गर्ल हैं तो डेफिनेटली आपके फ्लैटमेट आपको बताएगी धीरे धीरे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि शी विल वेट फॉर यू कि आप अपनी ट्रेनिंग फिनिश करें और तब उसको मिले. शी विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल, बट फिर भी थोड़े से रूल वो आपको बता देगी कि मेरे विजिटर्स आते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो मुझे पूछ लीजिए. और हो सकता है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं, लेट्स से नेगेटिव अबाउट द कंपनी. तो पहले तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, डोंट लिसन टू एनीथिंग. आपको कुछ नहीं सुनना है, आपको उसकी बातों में कोई यकीन नहीं करना है. येस, इफ़ द पर्सन इज़ गिविंग यू पर्टिकुलरली एडवाइस ऑन योर ड्रेसिंग, लेट्स से गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग, और आपको बताएंगे कि ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, देन डेफिनेटली, बट जस्ट बी केयरफुल. अपनी फ्लैटमेट से भी आपको बहुत केयरफुल रहना है. अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट स्मोक at all, because this is the non-smoking airline and you are not supposed to smoke. And I will advise you one more thing, don't open everything in front of your flatmate. Just be careful. और अगर आप दोनों एबिनिशू हैं, दोनों सेम बैच के हैं, दोनों फ्रेंड हैं, तो आप थोड़े से लकी हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे वो आप एक साथ करेंगे. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. द नेक्स्ट डे, आपका नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में होगा. आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि सुबह 7 o'clock और 6:30 व्हेनेवर इज़ देयर, एक शीट आती है जहाँ पे आपका पिकअप लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा. यू आर सपोज टू चेक, जाके अपने बस की टाइमिंग चेक करनी है. ये सारी चीज़ें आपको हाउसिंग ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर ब्रीफ कर देंगे. तो नेक्स्ट डे अपना पिकअप लेके आपको जाना है. दे विल वेलकम यू, दे विल शो यू एवरीथिंग, हाउ मेनी क्रू दे हैव, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट दे हैव, पूरा जितना है आपको सब बताएंगे. Now they will start your training with safety, first aid and the service.
These all are very important. They will give you manual देंगे पढ़ने के लिए जो आपको पढ़ना है सेफ्टी के बारे में, और उसके एग्जाम्स भी होते हैं. These exams every year they repeat. It's a recurrent exams and manual आपको बहुत अच्छे से रखना है. You are supposed to carry the service manual also, और so many memos जो होते हैं, जो भी उनके अपडेट इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आपको देंगे. डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हो जाता है. The same on that day it will be too tight that you have to do your medicals also. आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, साथ साथ आप अपना मेडिकल भी करेंगे. अगर उस मेडिकल में थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो दे कैन रिमूव यू फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड they'll put you in another batch. तो ये भी हो सकता है. Why I'm telling you all this in this video, so you just be prepared, you know, whoever is going there. आपको भी दिख रहा है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, और मे बी you're flying with Qatar Airways, but so many things are there. It might irritate you sometimes, but मैं यही कहूँगी कि you should have the patience. आपको बहुत पेशेंस के साथ जाना है, बहुत पॉजिटिव होके जाना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है. नाउ ट्रेनिंग में आप लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते माय डियर, सो मेक श्योर कि आप लेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग पीरियड में ही, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली दे गॉट दी वार्निंग लेटर. येस, यू हर्ड मी राइट, बिकॉज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ, और वो भी हिंदी में बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. प्लीज़ नो आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट, और आई कैन नॉट एक्सप्लेन. पर मैं चाहती हूँ, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे कि मैम हिंदी में भी बनाइए, तो मैं दोनों बात करूँगी, इंग्लिश भी और हिंदी भी. तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ ऑन टाइम होना है ट्रेनिंग में. यू कांट अफोर्ड टू गेट लेट, यू कांट अफोर्ड टू हैव द मेसी हेयर, या फिर मेकअप ख़राब आपका, या फिर यूजिंग मोबाइल फ़ोन इन लिफ्ट, or maybe your bag is not proper, and you know maybe you're showing off, your nail has to be like, you know, proper, your grooming should proper. They will give you the list and they will tell you how they want you to be. Maybe they will correct you first day, वो grooming का करेंगे आपको कि आपको कैसे ट्रेनिंग में आना है, but make sure आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं. you're acknowledging your seniors, ठीक है, ये सब करना है. नंबर एक्सचेंज, फ़ोन निकाल के नंबर एक्सचेंज वगैरह करना ट्रेनिंग टावर में, प्लीज़ दैट्स नॉट अलाउड. सो प्लीज़ डोंट डू इट, बिकॉज फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न ऑल्सो दे माइट सेंड यू होम. सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ. ट्रेनिंग पार्ट तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे. नाउ इन द फ्लैट ऑल्सो प्लीज ट्राई नॉट टू हैव एनी आर्ग्यूमेंट. अपनी फ्लैटमेट के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि आप जो भी वहाँ करते हो वो उनको वहाँ पता होता है. एंड योर लैंडलाइन माई डियर, there is a landline phone. Now you must be thinking why I'm talking about landline phone. There is a landline phone, there is a number. जब आपका मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता है तो रोस्टरिंग पीपल और ऑफिस पीपल दे रीच यू ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर जो आपके वहाँ लोकल होता है. दे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फोन ओनली यू कैन डू लोकल कॉल्स, लोकल लाइक landline to landline. You can't even dial in mobile. So just make sure what you're talking. Just be careful what you're talking, because it's all are recorded. Yes, you heard me right. मैं आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. वो जितने भी फ़ोन्स हैं, जितने भी लैंडलाइन हैं वहाँ पे, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो आपके घर पे हैं, या फिर आप कहीं ऑफिस में भी अगर किसी को फ़ोन कर रहे हैं, लेट्स से यू आर कॉलिंग अ बैंक, यू आर कॉलिंग अ हॉस्पिटल, यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड, anybody, all gets recorded, everything gets recorded. So just be careful on that. एंड आई कम बैक टू द बिल्डिंग ऑल्सो. जब भी आप बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं आपको मिनिमम रेस्ट फॉलो करना है. अब आपको लग रहा होगा मिनिमम रेस्ट क्या है, तो ये वो अगर मैं ये बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियो में बताया है कि व्हाट इज़ मिनिमम रेस्ट. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. यू मस्ट फॉलो योर मिनिमम रेस्ट, क्योंकि अगर आपने मिनिमम रेस्ट फॉलो नहीं किया माई डियर फ्रेंड, दे हैव रिमूव्ड सो मैनी क्रू फ्रॉम दी ट्रेनिंग एंड सेंट बैक होम. हाँ, थोड़ा सा उनका नुकसान होता है वट एवर दे हैव स्पेंडेड ऑन यू, बट इट्स ओके, दे कैन स्टिल मैनेज बिकॉज इट्स अ रिच कंपनी. सो इट्स ओके विद देम, यू नो, इफ दे सेंड you home. So just be ready. Make sure you're following what they are saying. If they say something, it means they mean it. So you really have to follow. Correct? I have made a note for you to tell you how many things are there. Now, the ID, if you lose your ID, by the way, you're supposed to pay some amount. So don't lose your ID. You must sign your contract. You're not supposed to discuss with anyone. You're not supposed to make any friends over there. Yes, you are hearing me right. You're not supposed to make any friend in the office. So just be careful about it, right? फ़ोन का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. कोशिश भी मत करना कि आप
कैफेटेरिया में, टॉयलेट में, और समवेयर यूजिंग योर मोबाइल फोन, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड. इट्स अ बिग नो. एलिवेटर में मेक श्योर देर इज अ कैमरा, बट यू डोंट लुक इन द कैमरा एंड से समथिंग. यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनीबडी. आप जोक भी नहीं कर सकते, बिकॉज लिफ्ट में भी कैमरा है, और लिफ्ट में बाय द वे माइक्रोफोन्स भी हैं. दे हेयर वट यू से. सो माई डियर फ्रेंड, जस्ट बी केयरफुल. डरने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. जस्ट डोंट टॉक टू मच. डू योर ट्रेनिंग. कम टू द फ्लैट एंड मेक श्योर फ्लैट में भी आप ज़्यादा बात नहीं करें तो अच्छा होगा. नाउ ड्यूरिंग ट्रेनिंग डेफिनेटली यू विल गेट ऑफ ऑन फ्राइडे, बिकॉज फ्राइडे ऑफ होता है. तो अगर थर्सडे को आपको बाहर जाना है, यू कैन गो नाइसली एंड कम बैक वट एवर टाइम इज गिवन. लेट्स से इट्स 3 o'clock, 3 बजे से पहले, सुबह 3 AM से पहले आपको घर आना है, तो मेक श्योर यू कम बैक ऑन टाइम. एंड इफ यू ड्रिंक, just be in limit. Don't drink too much. You really have to control on that, because ये सारे, if you're thinking कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, anybody can report. People are watching you. There are so many people. Even during training also they monitor you. They keep eye on you, what you are doing, what you are not doing. Yes, now you must be thinking why I'm telling you all this, because they do it. And trust me, I'm making this video to help you that how you can survive over there. So still I'm telling you there are many things, so many things. So I will, crew to crew, there is a big thing to complain. I have no idea actually till now. I have flown for so many years. I never got to know why they complained. People say they get paid for it, but I don't know. This thing I really cannot say yes, because I don't know. Few people, yes, they get promoted and they comes in a good books. It happens, I think. I'm not sure still, so I can't say, but I know people do complain. They love to complain. And these people, office people, also want some people to complain also. They, I think, pick somebody and talk to them, or maybe they say you keep eye on this one. So I have heard all that, but I don't know. I have not seen. But yes, what I know, if you complained, it will go in your file. Now let me tell you one thing. The moment you go to the office, let's say today they hired me, I landed to Doha, I got a flat also, everything is fine. Now from tomorrow, I'm gonna start my training. So my file, so you will have your personal file, and they will start writing about you. Yes, you heard me right. Even they write how you walk, with whom you talk, they write everything. So this file will remain till you resign the company. They keep everything, they keep record. तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो वो बिग बॉस के घर की तरह है. आई थिंक बिग बॉस भी थोड़े टाइप पे फ्लेक्सिबल होते हैं, बट ये लोग नहीं होते हैं. इफ़ यू डू एनी मिस्टेक्स ड्यूरिंग फ्लाइट, और मिस्टेक मतलब आप लोग अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू नॉट फॉलोइंग ब्लैक एंड वाइट, इफ़ यू नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर, दे विल नॉट हेजिटेट टू सेंड यू होम. इफ़ यू आर्ग्यू फॉर नो रीज़न, अगर आप क्रू टू क्रू झगड़ा कर रहे हैं, तो इफ़ let's say me and you had a fight, but you went to the office and complained, I was not at fault, but you were at fault, but you are the one who will go to the office and complain. So they will call me, they will take me off from my training, they will waste my day, and they will just they encounter me, they will ask me everything, what happened. If you start saying what happened, they will tell you, okay, you opened the door, then you came out, then what happened? That's how they encounter you. So make sure you really do your own work. अपना काम कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, घर आइए, खाना खाइए, ट्रेनिंग कीजिए, and start flying. Now, a big thing, when I said no smoking, it's mean if you do smoke in layover and your friend, I will not say friend, your colleague who were in the flight, the person might complain. They can click your picture, they can record your things. They just love to complain. They will just complain. They go to the office and say so and so person smokes. So you might get the warning letter or the termination or the demotion. So anything can happen. You really have to be careful about it. So smoking is not allowed. अगर आपने ज़्यादा पी ली है, वो पी के भी आपने रिसेप्शन में, in layover I'm talking about, if you had a fight or argument, anything, if you had with reception people or anything, they will send email to the direct Qatar Airways, and they were briefed very well by the Qatar Airways to report the crew. So every hotel, each and every hotel in every layover, they know where to complain and they know what to complain. So make sure you don't do anything. Just behave yourself. Behave yourself. Like pretend. If you cannot control, or you'd want to be a different person, so just hide from everybody. Just be careful. In the flight, as I said, just do your work. Don't joke around.
क्रू के साथ जोक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कॉल फॉर ट्रबल एनीथिंग। आई मीन आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, कोई झूठ बोल सकता है, कोई मे बी आपने कुछ और बोला हो, ऑफिस के बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी है। यू डोंट टॉक अबाउट योर CEO, यू डोंट टॉक अबाउट एनी परफॉर्मेंस ऑफिसर, यू डोंट टॉक अबाउट एनी क्रू। मैं बताऊँ, चाहे वो फिलिपिनोज हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो कोई भी हो, एवरीबडी लव टू कंप्लेंट। मुझे आज तक नहीं पता क्यों, बट दे लव टू कंप्लेंट, सो बेटर यूज अ जिप इट। और आप भी कंप्लेंट मत कीजिएगा। इफ somebody is saying something about the office, or maybe that incident, something happened to you and the same incident with other crew, because it happens, एक ही इंसिडेंट वहाँ 100 लोगों के साथ हो जाता है, तो प्लीज़ डोंट टेल देम टू, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेक श्योर यू डोंट talk about this. Right, I'll talk about the grooming. Grooming is very particular. It's before every training and before every flight they check your grooming. So make sure your grooming is up to standard. Your eyelashes are जितने लंबे होने चाहिए उतने रखिए, जितनी आपकी आईब्रो होनी चाहिए उतनी रखिए। जो कलर की लिपस्टिक आपको दिया जाएगा मैनुअल में, यू आर सपोज टू पुट, प्लीज़ डू दैट। डोंट डू कि यहाँ से तो आप रेड लगा रहे हो, लेवर से वापस आके आप पिंक लगा रहे हो जो आपको नहीं दिया है कलर। You know, people do complain, and people were terminated and demoted because of grooming also. For boys also, if they are here from here, it was long, they were removed from the flight, they were removed from the training, and they were demoted. Few people were terminated also and sent home. It is just what I feel, it's your day, it's just your day, because it happens, so many things happens with so many people, but the same time that is nothing happened to others also, so that also happened. It's all depends, you know, how you are and how is your luck and how you project things. So it is all your behavior overall. I will give you an example of mine, what happened to me at the end of the video. Before, I'll just tell you the grooming. So if you have removed the hat and you're walking on the corridor in the office, once they will give you uniform, please, that's not allowed. That's not allowed. You're not supposed to remove your hat. You're supposed to put on your hat. Or if you're in the room or briefing room or in the aircraft, there is a time to remove your hat. So please make sure you follow that. And grooming, I told you, if your shirt is dirty, you have put on too much gel, and if you are having argument with the grooming officer, that's it. Then you just wait for a call. Somebody will call you as you, and they will tell you tomorrow by 7 a.m. meet us in the office and give clarification. So what will happen? You will waste your day off. You will have an argument. You have to explain. And the other thing, they will write in your file that you came to the office for so and so reason. They will write, even if it's a conflict. Maybe if you go and ask your leave, unplanned leave, or maybe leave, they will mention that also. There is a particular person assigned for these kind of work who writes everything, that why you visited office, who called you to the office, and for what reason. Make sure you're very, 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 very careful about it, that why you're going to office. You have to think before you go to the office. You really have to make up your mind. I'm not saying don't go to office at all. ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि आप किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए भी अगर आपको बुलाया जाता है तो it will be right. Don't give too much clarification. If you're right, then you're right. Just stick to your statement that what you have said, even in layover with anybody. और हाँ, किसी को कुछ सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कि आप you're calling somebody, telling I'll help you with something. See, मैंने आपको पहले ही कहा, वहाँ nobody will support you. There is no support. You will not get any support from anyone. You have to be there by yourself, all alone. You have to fight for your rights. Now, what is the meaning of fight for rights? Talk about the job security. Grooming, I think I said enough. Grooming manual वो देंगे. Job security, do you think there is job security? I think, चलो let me talk about this. Somebody asked me कि इस job में security नहीं है. वो video मैं separate बनाऊंगी. This security, what I'm talking about, this is completely. Security is that if you go somewhere, then you think, okay, मुझे job मिल गया है, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं internationally fly कर रही हूँ. Now ठीक है, अभी मैं किसी से मतलब नहीं रखूंगी. I'll just fly, come home, and that's it. But there is no job security. They don't know why they are calling me to office. They don't know if they are saying, Suchita, this is your one-way ticket. Now you're going home. आपका सामान पीछे से आ जाएगा. So you don't even know that why they call you to the office, who complained about you. So just as I said, आप वो कीजिए what you're supposed to do. You're supposed to follow your manual. Job security यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. 2 साल तक तो you don't have that money saved. You know, they did not deduct from your salary. कि आपको वो लोग ग्रेजुएटी जिसे कहते हैं कि आपको एंड ऑफ दी आपकी जॉब जब आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको पैसा दिया जाता है. ऐसा तो कुछ है नहीं. तो 2 साल तक तो फिर भी यू ओके, बट आफ्टर 2 years आपका एक पैसा सेव होता रहेगा, वो आपको विल नॉट गिव यू दैट मनी. ठीक है. एंड नाउ द अदर पार्ट I want to highlight here is the salary. Please, whenever you get your salary, make sure you check your salary slip.
मेरे साथ बहुत कट पार हुआ है, इन्होंने मेरे इंटरनेट के पैसे काट लिए थे और वो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली। तो यू रियली हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। अपना बिल आपको बट यू हैव टू चेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोर सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि डिमोशंस आर वेरी 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 कॉमन। डिमोशन, लेट्स से आई एम द CSD, दे डिमोटेड मी टू CS और F2। F2 मतलब इकोनॉमी क्रू और फर्स्ट क्लास F1 क्रू। मतलब अब मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ। F1 F2 जो होते हैं वो बर्गंडी यूनिफॉर्म पहनते हैं। वंस यू सुपरवाइजर यू वेयर ग्रे यूनिफॉर्म, तो आप कैबिन सर्विसेज हो जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी के क्रू। कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर हो जाता है पूरे ऑल ओवर द एयरक्राफ्ट विच आई वॉज। तो लेट्स से कि दे डिमोटेड मी, तो मैं ग्रे पहन रही हूँ अभी बहुत सालों से, सडनली आई एम इन बर्गंडी। So many faces, will turn up to me and ask me, their eyes will ask, what happened? So that is too embarrassing. And if you say something like that, so people will understand that there is something which the person doesn't want to discuss. And you really cannot say who was at fault, but it does happen. After flying for 17 years or 18 years in this company, you are in burgundy uniform. It could happen. So relax. If it can happen to those people, then who you are? Just think in that way. तो भगवान ना करे कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, आपको F1 से F2 बना दिया जाता है। F2 का तो कोई चांस ही नहीं है। दे गेट द वार्निंग लेटर, फर्स्ट वार्निंग लेटर, सेकंड वार्निंग लेटर एंड थर्ड में टर्मिनेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बारी में 1 वे टिकट टर्मिनेशन। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, टू जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट एनीथिंग कैन हैपन टू यू। दे कैन कॉल यू टू द ऑफिस फॉर एनीथिंग, सो जस्ट रिलैक्स. And if you think you're not satisfied after talking to the manager, you can go to the higher department. You can talk to the CEO directly. But sometimes CEO doesn't want to talk to you. So that could be possibility as well. मैं यही कहूँगी, आप अगर वहाँ से जॉब से निकलेंगे तो इज्जत से निकलना. That's all I want to say. Now, so in the uniform department, in the Qatar Airways Medical Center, in जहाँ से टिकट्स लेते हैं हम, is staff department, any department, don't have any argument with anybody, because as I said initially, people are watching you, somebody is watching you. Even in the flight, people are watching you. They can come as auditor, maybe checker, maybe passenger, maybe flight deck. Flight deck का वैसे ज़्यादा involvement होता नहीं है, but still they could be, or maybe F1, maybe F2 if you're CSD, and maybe your CSDs. Anybody can complain, anybody can observe. So people are watching you. Please don't think people are not watching you. Removing your hat and having alcohol in the flight, because you're not allowed to drink alcohol in uniform. And in every station, mostly in station, they do your breath analyzer, BA, just to check that have you done alcohol or not. Maybe, and yes, by the way, if you're in the training provision period, and if you have too much drink in the night and you are breaking your minimum rest in the evening class and in the before going to the flight also, they check. So make sure alcohol consumption, when to have and when not to have. Alcohol is still acceptable, I mean off duty, but smoking is not acceptable. अगर आप करते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि आप पकड़े ना जाओ, ठीक है? और नो फ्रेंडली बनने की ज़रूरत नहीं है स्मोकिंग में, because people do complain. Just be careful. Passengers, gold card passengers, VIP, maybe first class, business class, economy, anybody can complain about you. Anybody. Except safety, you cannot get rid of. Service में late हो गया है, किसी ने कुछ कहा, don't be rude to anybody. Maybe crew to crew if you're having an argument. So just be careful about it. Now the security, let's say minimum rest. People get scared to report sick. Now what is the report sick? Let's say मैं back to back fly कर रही हूँ, it's too much hectic schedule and I really cannot give. तो मैं last moment पे अगर मैंने report sick किया है तो it is everyone, everyone, the crew, the rostering and the flight operation, so many things. So they have to pull somebody from the standby. Now what is the standby? ये इस चीज़ में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी. फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि आप ड्यूटी में होते हो लेकिन घर पे होते हो तो एनी टाइम दे कैन कॉल यू. सो ये बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो मेक श्योर कि 2 घंटे या 3 घंटे का वो टाइम देते हैं कि उससे पहले आप रिपोर्ट सिक कर सकते हैं. नाउ हे लेट मी गेट योर अटेंशन हियर. इफ़ यू रिपोर्ट सिक, matter doesn't end here. If you report sick, you're supposed to go to the hospital immediately, get the sick certificate, and sick certificate you're supposed to submit, which will show that हाँ आप सही में बीमार थे. अब चाहे रात के 11 बजे 10 बजे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. अगर आप बीमार हैं तो आप रिपोर्ट सिक करके बाहर निकल जाओ और बोलोगे कल मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो ये नहीं चलेगा.
Now if you're doing that, you're not going to the doctor, you're not getting the certificate. And for your kind information, even in outside hospitals, not only in Qatar Medical Center, I'm talking about the outside Doha hospital, or so many hospitals are there. They are already being instructed by the company that don't give just certificate. आप देखो कि क्रू बीमार है या नहीं, या उसने ऐसे रिपोर्ट से किया है तो वो भी हुआ है, तो you need to get it right कि मैं कहाँ बीमार हूँ, कैसे हूँ, किस लिए हूँ. अगर आप थक गए हो, रेस्ट करना चाहते हो, बट स्टिल यू वांट, मेरा स्टमक अपसेट है, कुछ है, तो मेक श्योर यू गेट द सर्टिफिकेट और नेक्स्ट डे आप उसको सबमिट करो. तब वो आपको ऑफिशियली एक सिक लेटर भेजेंगे और उसमें लिखा होगा कि आपकी एक सिक लीव काउंट हो गई है. अभी वो लोग बोलते हैं कि 14 सिक लीव्स यू आर सपोज टू टेक, बट 14 नहीं होती है, इट्स ओनली 7. नोबडी विल टेल यू दिस, इट्स ओनली 7, दे काउंट 14. आई डोंट नो हाउ, बट you might get the warning letter also. I got my first warning letter for my sickness because they told me you have reported sick a lot, so we are giving you warning letter. और warning letter का मुझे पता नहीं था because that time I was new. You know warning letter से क्या होता है? देर इज़ अनदर थिंग ऑल्सो. डिमोशन टर्मिनेशन के बाद मैं वार्निंग लेटर के बारे में आपको बताऊंगी. फिलहाल मैं ये जरा क्लियर कर दूं. जब आप रिपोर्ट सिक करते हैं, मेक श्योर वाई यू रिपोर्टिंग सिक एंड प्रोसीजर आप फॉलो करो. पता करो कि रिपोर्ट सिक करोगे तो क्या होगा. दिस क्वेश्चन यू कैन रेज ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड. ओके, in our time there were no one to tell us or give us the detail or not even the videos जहाँ से हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वार्निंग लेटर. देखिए, अगर आपको वार्निंग लेटर मिलता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो 6 महीने के लिए आप अपने डेज ऑफ, जो आपके डेज ऑफ दोहा में होते हैं, वो बाहर यूज़ नहीं कर सकते. बिग नो, मतलब अपने टिकट्स यूज़ नहीं कर सकते. प्रमोशन तो आप भूल जाइए. वो वार्निंग लेटर सिर्फ कहने के लिए 6 मंथ्स होता है. वो वार्निंग लेटर आपको 4 साल तक का कंसीडर किया जाता है और वो आपकी फाइल में भी होता है. 4 साल तक कंसीडर किया जाता है ओनली फॉर योर प्रमोशन. ओके, ओनली फॉर योर प्रमोशन, नॉट गोइंग आउट ऑफ दोहा. दोहा मतलब डेज ऑफ में, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. डेज ऑफ में आप घूमने नहीं जा सकते, अपने पेरेंट्स फैमिली से नहीं मिल सकते. क्यों? क्योंकि आपके पास वार्निंग लेटर है. तो ये भी एक क्लॉज है इसमें. वन मोर थिंग, इफ़ यू they will say you are not supposed to take anything from the aircraft. So please, my dear friend, don't take anything from the aircraft, anything, not even a sugar pouch. You're not supposed to take anything from the aircraft. If they find in your bag, if your flatmate will find, or maybe the housing checks are there. If you're in, let's say, I'm there and I went to Delhi, पीछे से वो मेरा room check कर सकते हैं. They have full authority to check my room. If they find a sugar, even a cutlery, or any kind of anything from the aircraft, let's say socks हो गया, amenity kit हो गए, या shawl हो गया, or anything, or maybe the blanket है दूसरा वाला, or anything Qatar Airways लोगों का और Qatar Airways की aircraft से लिया गया है, तो माय डियर फ्रेंड, डिमोशन, टर्मिनेशन, वार्निंग लेटर, anything you can get. So make sure you're not taking anything from the aircraft. Now let's talk about the visitors. If somebody is visiting you, if I'm a girl and a boy is coming to my house, before 9 p.m. he has to leave. नाउ 8:55 पे कॉल आ जाएगा. 8:45 से आपको सिक्योरिटी का कॉल आना शुरू हो जाएगा कि प्लीज़ लीव, इट्स गोना बी 9. सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एज सच. इवन इफ आई हैव अ गर्ल फ्रेंड, मेरी गर्ल फ्रेंड जो है मिलने आती है मुझसे, एंड अगर वो भी विजिटर है, दूसरी बिल्डिंग में रहती है, तो मेक श्योर कि वो भी 9 o'clock चली जाए. या फिर देयर वुड बी अ पर्टिकुलर टाइम शी हैज़ टू लीव द बिल्डिंग. शी कांट स्टे ओवरनाइट विद मी. अगर मेरे साथ रहेगी तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द ऑफिस. एंड इवन इफ योर मॉम, योर सिस्टर, इफ दे आर स्टेइंग विद यू, देन यू आर सपोज टू टेक द नॉन ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम योर फ्लैटमेट, फ्रॉम हाउसिंग डिपार्टमेंट. यू आर सपोज टू गिव टिकट्स एंड वीज़ा का पूरा डिटेल जो भी है वो आपको अपने हाउसिंग डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा. सो दैट्स द लॉन्ग प्रोसीजर. एंड योर फादर, योर ब्रदर, nobody is allowed to stay with you, so they have to stay in a hotel. Or if your parents are, or your your husband visited you and he wants to stay with you, so you have to take the permission of the hotel. पूरा बुकिंग दिखानी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी. Now let's talk about the permission. Permission is the big thing. अब कुछ लोगों को लग रहा होगा परमिशन, यस, हम इंडियंस को स्पेशली वी फील कि हमारे पेरेंट्स बहुत इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में, और वो बहुत, हमें हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है. तो हे माय डियर फ्रेंड एंड बच्चे जितने भी आप लोग जा रहे हो, गर्ल्स एंड बॉयज, लिसन केयरफुली. इफ़ यू जॉइनिंग Qatar Airways, you have to take permission for everything. If you want any changes in your grooming, let's say you want to do the tattoo eyebrows, you need to take the permission. If you're wearing glasses, you need to take permission. If you're wearing wedding ring, or any kind of ring you want to wear, you need to take permission. If you want to put any particular lipstick, or you have any allergy, you want to put particular concealer or something like that,
you have to take the permission. If you want to wear cabin shoes, you cannot wear heels because of your back pain or anything, you need to take permission. You want to marry, you need to take permission. And you're going for unplanned leave, you have to take permission. If you're marrying a crew, you need to take permission. If you're marrying a local person, you need to take a permission. If you want to go on your days off, you need to take the exit and you need to take the permission if you're going suddenly. So permission, permission, permission. If you're staying overnight with a crew, a girl or boy, you need to take the permission. If your family is visiting you, you need to take the permission. So, and there is a certain time during your minimum rest. थोड़ा सा मैं बात करूंगी इस बारे में. 2 फ्लाइट है आपकी, आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं शॉपिंग करके खाना लाने के लिए. उसके बावजूद nobody can visit you. If there is anything, you need to take permission. तो permission, permission. For everything, you need to take permission. So be ready for that. What you're supposed to take the permission, please ask. They want to know everything. तो grooming से लेके आपकी personal life से लेके everything you need to take permission, right? You want to report sick? Of course, not permission, but you need to submit the certificate. Clarification. Yes, अब हम जाएंगे clarification पे. You don't know if you had an argument in, at the airport. Maybe you did something, maybe आपने किसी passenger को बोला होगा कि I'll be back, I'll get you water, and I भूल गए आप लोग. You never know. Just be ready to give explanation. Never ever argue. Just be ready for that. They can pull you from your days off. So make sure you're dressing up properly. अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए बुलाया है, maybe it's your fault. Make sure in proper grooming. Let's say lashes, lipstick, everything. मतलब ऐसे बन के जाइए जा रहे हो. Don't worry about it. You have to be professional. तो वो चीज़ एक तरफ है, ये चीज़ एक तरफ है. तो make sure you're following the standards and procedures. आपको मैनुअल दिए जाएंगे, वो आपको उसके एग्जाम्स भी होंगे. एनीबडी कैन रैंडमली पिक यू इन द फ्लाइट और इन द ब्रीफिंग रूम. ऑफ कोर्स एवरी डे दे ग्रिल, बट इन द फ्लाइट एनीबडी कैन टेल यू. एनीबडी से मतलब है मेरा चेकर और CSD और CS, चलो लेट्स आई टेक योर असेसमेंट. मे बी दे विल चेक ऑन योर परफॉर्मेंस. मे बी कमिंग बैक आपकी जाते हुए फ्लाइट में असेसमेंट नहीं है, लेकिन आते हुए फ्लाइट में आपका असेसमेंट वो ले सकते हैं, विच विल इफेक्ट योर प्रमोशन. तो मेक श्योर यू आर अप to date with all the standard and procedures. Now let's talk about the standard and procedures in short. Safety के जितने भी manuals होंगे, safety related questions वो आप सब पूछ सकते हैं. First aid का anything they can ask you. Service का any alcohol and how to do the service in long haul, short haul, anything, whatever comes, they will ask you everything. Even the minimum rest they will ask you. दे विल आस्क यू कि हम लोग जब फर्स्ट एड होता है तो हम तो किसको कॉल करते हैं. और दे विल आस्क यू कि नॉर्मल अगर टेलीफोन हमें कॉल करना है फ्लाइट से तो उसके कितने चार्जेस हैं. दे कैन आस्क यू जो आप स्टेशन इन्फॉर्मेशन, लेट्स से यू आर गोइंग टू पेरिस, तो पेरिस में क्या है, क्या अलाउड है, क्या नहीं है. तो एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी हियर, यू हैव टू स्टडी. आप पढ़ के ही आपके हर चीज़ में एग्जाम है. 3 years दे डू द डिचिंग मतलब आपको दुबई लेके जाएंगे और ट्रेनिंग होगी और जो भी आपका फाइटिंग होगा. लेकिन एवरी ईयर दे विल डू योर रिकरेंट. हर साल आपको एग्जाम देने पड़ेंगे पूरे एयरक्राफ्ट्स के, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं और जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने आपको पढ़ाया है. तो मेक श्योर यू डू ऑल दैट. विद कतर एयरवेज अभी मैंने फ्लाइंग करना शुरू कर दिया है. मैं दिल्ली विजिट करने गई हूँ अपनी फैमिली को. तो एज सुन एज यू लैंड इन दोहा यू नीड टू स्वाइप योर ID. तो सिग्नल विल गो कि आप ऑलरेडी दोहा में हो. यू हैव नॉट ब्रेक योर मिनिमम रेस्ट और आप टाइम से यहाँ आ गए थे. समटाइम्स दे विल टेल यू टू कीप द बोर्डिंग पास ऑल्सो. सो मेक श्योर यू कैरी द बोर्डिंग पास. नाउ वन मोर स्पेशल थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन, स्टिकर्स and the keychains or any kind of hanky panky, the glittery thing on your bags are not allowed. It's not a sanitizer bottle, anything. और अपनी मर्जी से कोई भी मास्क पहन लिया या कुछ भी आपने ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड के खिलाफ किया है, if you're on duty or maybe near the tower, somewhere tower जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पीरियड में, तो प्लीज़ they can send you home. So just be careful about it. जैसा कि मैंने आपको बताया, don't play smart over there. They are very smart. आप बात में कैमरे हैं वहाँ पे. जब आप एंट्री करेंगे अपने वहाँ पे बिल्डिंग में, there would be a camera. Even outside there would be a camera. बाकी मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग आपको बता दी है. तो कैमरे से वो ये तक पता कर लेते हैं कि what you are carrying and how much time you were at somebody's place. So they will keep all that. And I think why not? They are paying you so much. They are giving you lavish life. They are giving you everything what you wish for at age of 19 and 20. Now अभी तो 21 है.
what you wish for at age of 21, 22, 23. Come on, you are so young, you have money, you are exploring, you have everything, whatever you want to do. So they have to do something, you know, ये तो करना पड़ेगा. वेल फर्निश्ड घर देते हैं आपको, यूटेंसिल्स देते हैं, माइक्रोवेव देते हैं, सब कुछ, टोस्टर, एवरीथिंग दे प्रोवाइड यू. सो व्हाई नॉट? They have full right, you know, you have to pay for this. Why? Because you're getting so much paid, of course. Nothing is for free, right? So they only ask for you this. Now let's talk about the misbehave. क्या ऑफिस वाले आपके साथ मिसबिहेव करते हैं? नहीं. क्या वो आपको रात को कॉल करते हैं या परेशान करते हैं? नहीं. क्या कोई आपको आपके ड्रिंक में मिला के आपके साथ कुछ कर सकता है? नहीं. क्या आप वहाँ सेफ हैं? Yes, you are safe. कोई आपके साथ बिना आपकी मर्जी के कुछ कर सकता है लेओवर में? क्रू आई एम टॉकिंग अबाउट, और मे बी ऑफिस में या रोस्टर पीपल, एनीबडी कैन डू एनीथिंग विद यू? नो, इट्स अ बिग नो. इट्स वेरी सिक्योर. इट्स वेरी सिक्योर. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. उस पार्ट को छोड़ के बाकी जो मैंने कहा है एवरीथिंग, अभी जो ये मैं बता रही हूँ, सिक्योरिटी के अलावा आपको वहाँ कुछ फील नहीं होता है. मुझे वट लेट मी स्टेट बैक एंड वर्क ओवर देयर बिकॉज आई वॉज वेरी सेफ देयर. नोबडी वॉज क्वेश्चनिंग मी एंड आई वॉज अर्निंग, आई वॉज डूइंग माई वर्क एंड जस्ट कमिंग होम. आई हैड नो फ्रेंड, फालतू फ्रेंड मेरा कोई वहाँ नहीं था. I was not calling anyone. I was not going anywhere. I was not talking about the company. I was living my life. I was happy. I was flying, earning money, working hard. अपना काम किया मैंने. Yes, मुझे भी ऑफिस बुलाया गया. I think every year in my every year of my career, I was giving clarification because I had an argument with the ground staff, but they let me go. No warning letter. Only one warning letter I had in my whole career, just because of the sickness, because it was not clear. Did I have had any argument with my conflict? Basically, yes, I had. I do had, because if we are flying with so many crew, international crew, there are definitely, of course, there would be a and the way of communication, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है आप में और दूसरे लोगों में. तो वहाँ भी कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है. बट क्या ये ऑफिस जाता है? येस. क्या आपको बुलाया जाता है? येस. क्या डे ऑफ वेस्ट किया जाता है? येस. आई डिड दैट. आई डिड एवरीथिंग, बट दे डिड नॉट थ्रो मी आउट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज आई यूज टू वर्क लाइक अ डोंकी. मैं अपना सारा काम करती थी. आई नेवर यूज टू लाई. आई वॉज नॉट लेजी. आई वॉज ऑन टाइम. I never missed my flight. I was never no-show, and I was well groomed. I did not make any friend in the office or rostering or with anybody. I used to say hello to everyone, but no, personally, I was never involved with anyone. Never ever. That's how I could, survive. I never remove my hat when I'm not supposed to. I always listen to my seniors. If they told me to do something, I never used to cross question why should I do it. There would be toilet assigned to you, assigned to you in every flight, that this is your toilet to look after, कि clean है या नहीं है, dry है या नहीं है. I used to do my work. I used to make sure everything is fine. Sometimes I used to help my colleague, and not sometimes, most of the times. And I never used to say, okay, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, मैं क्यों करूँ, मैं किस लिए करूँ. तो ये एटीट्यूड नहीं रखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं. बी फ्रेंडली, डोंट बी ओवर फ्रेंडली. बी फ्रेंडली, बी प्रोफेशनल. अपने कहते हैं ना, डिग्निटी से जाना चाहिए और डिग्निटी से आना चाहिए. सो टुडे आई एम वेरी प्राउड कि मैं डिग्निटी से गई और डिग्निटी से आई, और डिग्निटी से मुझे मेरा पूरा पैसा मिला. इतने सालों का जो मुझे पैसा मिला, दैट वाज, ओ माय गॉड, वाओ. सो बी लाइक दैट. बी. सो मैंने शायद आपको बहुत सारे डिसएडवांटेज बता दिए हैं इसके. मेक श्योर कि आप फ्लाइट में लेजी ना हो, मैं सब बोल चुकी हूँ आपको. यू शुड हेल्प पीपल. येस, वहाँ पे फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास में अगर आप इकोनॉमी क्रू है तो आप जाके वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, या फिर वहाँ पे बार बार जाना इज़ नॉट अलाउड. सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग ऑल दैट. वंस यू नो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज़ डोंट डू इट. इफ समबडी इज़ गिविंग यू फीडबैक, प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली. बस में आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते. बट हाँ, मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि दैट यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट. आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल किया होगा आपके लिए. तो आप प्लीज़ एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट मेक इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग. आई विल डेफिनेटली विल टेल यू. बट देयर जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, जस्ट फॉलो दैट. डोंट कंप्लेंट अबाउट एनीबडी. यू डोंट बीच अबाउट एनीबडी. डोंट डू दैट. जस्ट अपनी पढ़ाई करो, अपना पैसा कमाओ. और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपका दिल नहीं लग रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट आई शुड नॉट बी डूइंग this job is not good for me, please leave the job.
पुट योर रेजिग्नेशन पेपर और प्यार से बाहर आ जाओ. यू विल गेट हंड्रेड्स जॉब आफ्टर दैट. बट आप बेमन से कोई काम कर रहे हो, दैट्स रियली नॉट करेक्ट बिकॉज यू आर स्पॉइलिंग द इन्वायरमेंट. And in the hotel, as I said, in layovers also, you're spoiling everything. So make sure you don't do that. Argument करना, attitude दिखाना, see एक point तक ठीक होता है, लेकिन not in this kind of jobs. You know, this is not government job. और मुझे लगता है कि you should be more humble. जितना आप humble होंगे, उतना आप shine करेंगे. तो मैंने बहुत कोशिश की है इस वीडियो में आप लोगों की हेल्प करने की, हर चीज़ को कवर करने की. और एक चीज़ और, कंपनी से झूठ मत बोलिए. इफ़ यू हैव टैटूज विच यू हैव नॉट मेंशन बिफोर. एंड one more thing I want to mention here before I end the video. If your boyfriend girlfriend is there, maybe आपको फ्लाइट में कोई पसंद आया and you know you're dating somebody, तो they will know somehow, you know, and they will know because of your entries and all. Maybe if you're a friend and you're meeting too often, they will assume that you're a couple. So you will not get flight together, and so most of the time they will not give you the days off also in Doha together. So please don't fight over all that. Don't fight, because that's the way they are. That's the way. And one more thing, if your sibling is there, your wife is there, anybody, so you cannot fly in one flight. मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो देख लीजिएगा. बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कवर्ड दैट कीप योर एटीट्यूड एंड योर स्टाइल एंड एवरीथिंग इन योर पॉकेट, प्लीज़, if you want to fly with Qatar Airways. As I said that how I was, what I was, it helped me to stay there for long, and I really felt safe, enjoyed. Don't manipulate things, don't make stories, because Qatar Airways में सब पता चल जाता है. और I will not name only Indians, any nationality, anybody can report. So just I'm very straight on that. I will not say it's only the Indians. So जो भी वहाँ जा रहा है, just be positive और open mind से जाइए. Don't feel you're in jail. People call it jail also. You will hear a lot of negative comments from the crew. As I said, वो आपसे कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं. Don't believe on that. You just do your work, come home, enjoy, go on your days off. ज़्यादा किसी के साथ नहीं, अपना लिमिट में बात करो. After so many years, let's say 5, 6 years or 8 years, if somebody is your friend, your best friend, then of course you can share everything. But I will advise you, just be to yourself. पैसा कमाओ और वापस आओ, and gain experience. दुनिया घूमो, फैमिली को हेल्प करो. एंड पढ़ाई ऑल्सो यू कैन डू, साथ साथ में स्टडीज़ भी कर सकते हैं. वो आपको स्टडीज़ के लिए भी छुट्टी देंगे, बट यू नीड टू फॉलो द राइट चेन. मेक श्योर यू फॉलो द राइट चेन. आर्ग्यू नहीं करना है. So I'll end my video on this. Take care of yourself. Good luck to you, and thank you so much once again for so much love and believing in me. And I feel very happy when I see your messages. I just want to cover one thing. Please don't expect me to chat with you and every time I answer you on your Instagram. That will be very difficult for me because I am also busy. I'm taking out some time and making this video for you. लेकिन मैं आप लोगों के साथ चैट नहीं कर सकती एंड आपको जवाब नहीं दे सकती हर बार, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ का वीडियो बना चुकी हूँ. बट समथिंग हैपन इन योर पर्सनल लाइफ, और मे बी यू सेड समथिंग टू Qatar Airways. नाउ यू want me to answer. See, I cannot answer. I cannot assume. I can't give you wrong answer on that. So I'm really very sorry. लेकिन हाँ, मैं जो मुझसे हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी. बस अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Share the information. Thank you so much once again. Take care of yourself. Bye bye. Take care. Ciao ciao.